Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. My name is Dr. Sajid Iqbal and I am going to teach you the course of Calculus 1. So, the first question is that what is calculus? Calculus is the study of rate of change in fact. So, change in one variable with respect to another variable. But before starting the calculus 1 or any related branch of mathematics, we should start from the real number. So, this is the first basic thing in mathematics. So, what is real number? Real numbers are in fact the number which can be represented in the form of decimals. So, let us start from the real line. So, here is the calculus 1. This is the real line and 0, this is the positive side of the real line and this is the negative side of the real line, and here we have the different number 1, 2, 3 and -1, -2, -3 and up to so on. So, first it is important to know that what is the different types of numbers. So, first is the set of natural numbers. These are 1, 2, 3 and up to so on, and we have the whole numbers. So, 0, 1, 2, 3 up to so on, and the set of integers are denoted by z, and these are 0, plus minus 1, plus minus 2 and up to so on. Next, we want to define the set of rational numbers. Set of rational numbers are denoted by this q, which can be written in the form of p by q, where pq belongs to the integer, may be positive and negative, but it is important to mention that q must not be equal to 0. And the number which are not rational are called irrational numbers, and irrational numbers are usually denoted by q dash. So, this is the set of rational, and this is the set of irrational, and set of irrational contains like square root 2, square root 3 and up to so on. So, these are the number of, so these are the set of different numbers. Before and starting our main part of the lecture, we should understand the concept of properties of the real numbers, mean rules of the inequalities. In fact, what is inequality in nature? In the real world, every two real numbers are comparable. If you have the two real numbers a and b, there would be three possibilities. Either a would be greater than b, or b would be greater than a, or both can be equal. So, there are three possibilities. Let us write the things mathematically. How we can write these things mathematically? So, let us describe the rules of inequalities first. Rules of inequalities. Though if a, b, c are real numbers, if a, b, c are real numbers, then the first thing is if a less than b, this implies that. So, this symbol is the implies that. So, if a less than b, then a plus c is less than b plus c, where c is any real number. If we add the real number c on both sides, then inequality remains unchanged. And if a is less than b, then this must implies that a minus c is less than b minus c. The third is if a is less than b, implies that, and
a positive real number c greater than 0, this must implies that AC is less than BC. It means that if we have the inequality A less than B, and if we take the product of on both sides with a positive number must be greater than 0, then this inequality remains unchanged. But in other case, if we have this C less than 0, then what happened? Let's write this thing. The fourth is if A is less than B and C is less than 0, and this must implies that AC must be greater than BC, then inequality will become the opposite, reverse in direction, we can say that. And if the fifth is if A greater than 0, if we have the positive real number, this implies that the reciprocal of A, we can read this is the reciprocal of A ko ulta dena 1 over A, this must be greater than 0. Like this one, if we have 5 greater than 0, then 1 over 5 must be greater than 0 again. If A and B are both positive real number, if A and B are both positive or both negative real numbers, then A less than B must implies that 1 over B less than 1 over A, means that if you have the A less than B, then if you take the reciprocal, then inequality would be in this form 1 over B less than 1 over A. So, these are the basic rules of the inequalities. So, the another question arises, if we have the sets, then how we can describe the sets? How we can describe the set? If for example, we have the set A, we have this set A consists of the first 5 natural number. So, this is the a set can be written in the form of 5 positive integer, or you can say that first 5 natural number. This set can be described as also in this form, consists of the x such that x is an integer and this x is less than 6 and greater than 0. So, the same set can be written in this form. So, this is the descriptive way and means to say this is the way to describe the set, the above set in this form. So, it is important to note that because when we shall जब हम मुख्तलिफ किस्म के सेट्स को सॉल्व करेंगे और उनके सोल्यूशन सेट्स लिखेंगे तो फिर हमें इन दो चीज़ों की मतलब कि दो सेट्स को लिखने के तरीके का भी पता होना चाहिए. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, व्हाट इज एन इंटरवल? आपने इंटरवल के बारे में सुन रखा होगा एफएससी में, इंटरमीडिएट में, छोटी क्लासों में. तो इंटरवल क्या है? इंटरवल असल में रियल लाइन का एक छोटा सा पार्ट है. आई मीन टू से यू हैव दिस रियल लाइन और इसका एक जो छोटा सा पार्ट होगा दिस वन, दिस इज कॉल्ड द इंटरवल. More precisely, if someone asks to define interval, and your answer must be a subset of the real line is called interval. And interval must contain at least 2 points. The one point must be the starting point and second would be the end point. So, let us describe the interval and its different forms. Intervals. Interval is in fact a subset of real line, and real line is denoted by this R. This R. Please see that this R stand for the real line.
And intervals are of the two type. We have the finite interval and infinite intervals. So there are the two types of the interval. Finite intervals are in fact like this one whose length is finite and the starting and the ending points are two real numbers. And the infinite interval is in fact, if we can write this minus infinity to plus infinity, and this is the closed interval. If the endpoints are the are included in the interval, then we can say that this is the closed interval. If both endpoints are not included, then we can say this is the open interval. This is the open interval. And if we write in this way, it means that this is the half open interval. 2 is not included, all the points starting from the right side of the 2, and 3 means the interval ending with the 3, but 3 is included in the point, included in the interval. इंटरवल के अंदर इसको शामिल किया गया, ठीक है. सो अदर ऑल पॉइंट्स बिटवीन 2 and 3, इफ 2 and 3, these are called the interior points, these are called the interior points, and these are called the end points or boundary points. The next is how we can solve the different types of inequality. Inequalities को आप solve कैसे कर सकते हैं? Let's see this. Solving inequalities. After the complete understanding of the interval, open or closed interval, then we are able to solve the inequalities and we are able to write the solution sets. How we can write this? Because when we solve the inequalities, we shall have the solution as a interval. Then we shall write in a way that must be very clear. So the first is this, solve the following inequalities. The first is this one, if we have 2x minus 1 less than x plus 3. Solve mean you have to find the value of x or for which value of x the following inequality is true. x की आपने वो values find out करनी है जिनके लिए ये वाली inequality, this inequality holds true. तो कैसे? You have the rules of inequality. I told you in the start of the lecture के start में मैंने आपको बताया था कि ये किस तरीके से आपने inequalities के rules हैं और उनको apply कैसे करना है. The first thing is this, आप x वाली terms को एक तरफ करेंगे और x के बगैर जो terms हैं, real numbers हैं, constants हैं, आप उनको एक तरफ shift करेंगे. Means x, इस x को you can shift on this side and minus 1 can be shifted on this side by using the simple rules of the inequality as told you earlier. So we have this 2x, x can be subtracted on this side, minus x, inequality remains the same, this one. So this 3 minus 1 becomes the plus 1. So this implies that 2x minus x is actual 1x and we can write it x is 3 plus 1 is 4. Means all those values which are, all those real number which are less than 4 is the solution set of this, solution set of this inequalities. So what will be the values of x? If we draw this inequality on the real line as the form of interval, then what will be the solution? So dear students, we have this real line, we have this real line. So this is the 0. Note that on right side we have 1, we have 2, we have 3 and we have 4. So x is less than 4, mean 4 is not included.
4 से x की वैल्यू छोटी है तो इसका मतलब है कि 4 शामिल नहीं है। 4 से पीछे कौन सी वैल्यू है वी कैन नॉट टेल, हम इसको बता नहीं सकते। 4 से पीछे कौन सी वैल्यू है 3.999। आप इस किस्म के 9 जो हैं वो बहुत सारे लगा सकते हैं। सो यहां पर 4 के ऊपर हम लोग एक हॉलो सर्कल लगा देते हैं। हॉलो सर्कल मतलब है कि ये एक गोल दायरा आप लगा देते हैं, दायरा लगा देते हैं जो अंदर से खाली है, जो ये शो करता है कि 4 शामिल नहीं है। 4 से पीछे x की तमाम वैल्यू, कौन सी तमाम वैल्यू, x से छोटा 3 है, 2 है, 1 है, 0 है, -1 है, इधर -2 है, -3 है और -इन्फिनिटी तक। सो मीन्स दैट, तो ये -इन्फिनिटी, लिहाजा सोल्यूशन सेट आपका क्या हुआ, ये हॉलो सर्कल है तो इट्स मीन्स दैट द इंटरवल इज ओपन। So for the less than you must have the open interval, and minus infinity obviously this is the we are working on the real line, so minus infinity must be open, so minus infinity and 4, so the solution set is minus infinity and 4, so x must belongs to this interval। x अगर इस interval को belong करेगा, इस interval में से values होंगी तो your result remain true, आपकी इनइक्वालिटी ट्रू होगी। एंड दिस इज द वे टू राइट द सॉल्यूशन सेट, और सॉल्यूशन सेट को लिखने का ये तरीका है। आई कैन गिव यू द 2 एग्जांपल फॉर योर प्रैक्टिस। फॉर एग्जांपल वी हैव द अदर वन इज -x by 3 एंड लेस देन 2x plus 1, and the third one is c is 6/x minus 1, this must be greater or equal to 5. So for the practice, for the exercise, you have the 2 problems, you have the 2 inequalities. You have to solve the following 2 inequalities by using the same procedure. आपने प्रोसीजर बिल्कुल सेम अडॉप्ट करना है। सेम अडॉप्ट करने का मतलब ये है कि बाय यूजिंग द रूल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन इन द इनइक्वालिटी एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, जो आपको लेक्चर के स्टार्ट में बताए गए थे। अगर उसको आप देखेंगे, ये 3 इधर डिवाइड हो रहा है, पॉजिटिव रियल नंबर है, आप इसको दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई करेंगे, इनइक्वालिटी आपकी बिल्कुल सिंपल हो जाएगी। लाइक दिस वन, एक्स वाली टर्म्स को एक तरफ शिफ्ट करेंगे, बगैर एक्स के जो वेरिएबल मींस कांस्टेंट टर्म्स हैं उसको आप दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे, आपके पास एक सॉल्यूशन सेट आएगा, उसको आप रियल लाइन की मदद से पूरी तरह से ड्रॉ करके अपना आप सॉल्यूशन सेट फाइंड आउट कर सकते हैं। और सिमिलरली द थर्ड, द सी पार्ट्स, यू कैन डू द सेम थिंग अगेन। आप तीसरे पार्ट के लिए भी आप इसी तरह की प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। सो दिस इज द वे टू राइट एंड सॉल्व द इनइक्वालिटीज। अभी तक आपको रियल नंबर सिस्टम, मुख्तलिफ किस्म के सेट्स, उसके बारे में बताया है, और इनइक्वालिटीज को सॉल्व करके सॉल्यूशन सेट और इंटरवल्स के बारे में बताया है। तो नेक्स्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज द एब्सोल्यूट वैल्यू। व्हाट डू यू मीन बाय एब्सोल्यूट वैल्यूज? एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है? किसी भी रियल नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू से क्या मुराद है? सो वी शैल आंसर दिस क्वेश्चन। एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ कोई नंबर अगर आपके पास x हो तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू को कैसे डिफाइन किया जाता है? सो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द एनी रियल नंबर, एनी नंबर x, अगर आपके पास कोई नंबर x होगा तो उसकी x की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है दैट इज डिनोटेड बाय दिस एब्सोल्यूट, दिस मॉड, दिस मस्ट बी इक्वल टू द सेम नंबर x whenever x must be greater or equal to 0 and minus x whenever x must be less than 0. For example, what does it mean? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास, मैं एग्जाम्पल आपको यहां पे दे सकता हूं, एग्जाम्पल, इफ वी हैव 3 का जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगी, ऑब्वियसली लुक एट द डेफिनेशन, x आपके पास है, यहां पे रियल नंबर 3 है, अब 3 ग्रेटर देन 0 है। अगर नंबर ग्रेटर देन 0 होगा तो ऑब्वियसली द वैल्यू वुड बी द सेम, तो ये आपके पास 3 का एब्सोल्यूट 3 ही आ जाएगा। एंड इफ यू हैव -5, तो -5 की जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगी वो क्या होगी? मींस x आपका अब यहां पर -5 है और -5 है लेस देन 0। लेस देन 0 अगर कोई नंबर हो तो उस नंबर के साथ नेगेटिव आएगा, मीन नेगेटिव ऑफ
x की जगह पे अब क्या आ रहा है -5 माइनस ऑफ -5, सो आंसर वुड बी 5। तो सिंपली हम लोग आमतौर पर ये कहा जाता है कि जी मॉड जो है वो नेगेटिव को पॉजिटिव कर देता है, लेकिन उसके पीछे जो साइंस है, जो मैथमेटिक्स है, वो ये है इनफैक्ट कि बाय डेफिनेशन अगर आप देखेंगे तो वो नेगेटिव को पॉजिटिव कर देता है, तो वो होता बाय डेफिनेशन है। सो दिस इज द वे टू डिफाइन दिस। इसको डिफाइन करने का तरीकाकार या सॉल्व करने का तरीकाकार ये है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ प्रॉपर्टीज हैं। सो लेट्स राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस एब्सोल्यूट वैल्यू प्रॉपर्टीज। एब्सोल्यूट वैल्यू properties. The first property is minus a mod is equal to a mod, कि किसी भी नेगेटिव नंबर का जो मॉड होगा और पॉजिटिव नंबर का मॉड बोथ आर इक्वल। एब्सोल्यूट वैल्यू जो होगी नेगेटिव रियल नंबर की और पॉजिटिव नंबर की वो बिल्कुल सेम होगी। मीन्स टू से इसको अगर ऐसे आप रीड करेंगे तो दैट वुड बी मोर मैथमेटिकल, कि कोई नंबर अगर हो और उसका एडिटिव इनवर्स हो, एडिटिव इनवर्स मीन 3 है तो उसका एडिटिव इनवर्स -3 होगा, अगर -5 है तो उसका एडिटिव इनवर्स 5 होगा। प्लीज नोट दैट कि सिंबल यानी कि प्लस से माइनस और माइनस से प्लस को चेंज करने से आप एडिटिव इनवर्स हासिल कर सकते हैं, तो इन दोनों का सेम होगा। दूसरी प्रॉपर्टी है कि अगर ए बी इसका एब्सोल्यूट वैल्यू हो तो दैट मस्ट बी इक्वल टू ए मॉड बी मॉड। यू कैन रीड इट दिस द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू रियल नंबर्स। दो रियल नंबर के प्रोडक्ट की एब्सोल्यूट वैल्यू जो होती है उनके एब्सोल्यूट वैल्यू के प्रोडक्ट के बराबर होती है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू जो होगी वो दो रियल नंबर को सेपरेट आप कर सकते हैं। और सिमिलर थिंग हैपन विद द डिवीजन, मींस a over b, this mod, this absolute value of a over b must be the absolute value of a over absolute value of b. And the fourth is the triangular inequality, a plus b mod must be less than equal to a mod plus b mod. So the fourth one is called the triangular inequality, कि दो नंबर्स का अगर आपके पास सम हो और उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू आप लेंगे तो दैट मस्ट बी लेस देन इक्वल टू दी, अगर उनको आप सेपरेट करेंगे तो आपके पास ये साइड ग्रेटर होगी तो ये वाली साइड लेस देन होगी। सो यूजुअली दिस वी कैन कॉल इट द ट्राइएंगुलर इनइक्वालिटी। सो दिस इज कॉल्ड ट्राइएंगुलर inequality. So these are the four properties of the absolute values, four basic properties. So we have some absolute value को interval के साथ क्या connection है? The next question arises, what is the connection between the interval and the absolute values? इन दोनों के दरमियान ताल्लुक किस तरह से है कि किसी इंटरवल को एब्सोल्यूट, अगर इसको क्वेश्चन को आसान करके आपके सामने रखा जाए तो किसी एब्सोल्यूट वैल्यू को इंटरवल के अंदर कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है या इनके अंदर आपस में रिलेशन क्या है। लेट्स डिस्क्राइब द रिलेशन। सो द सिंपली वी कैन राइट द नेक्स्ट थिंग इज एब्सोल्यूट वैल्यू एंड इंटरवल्स। सो एब्सोल्यूट वैल्यू एंड इंटरवल्स, इसकी कुछ हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, उनको डिस्कस करना जरूरी है। तो कैसे, इफ ए इज एनी पॉजिटिव रियल नंबर, इफ ए इज एनी पॉजिटिव रियल नंबर, then the first thing is, in fact the fifth, the story is continued from here. सारी बात यहां से ही आगे चल रही है। चार बातें आपके सामने यहां लिखी गई हैं, फिफ्थ अब आपके सामने आने आ रही है एब्सोल्यूट वैल्यू और इंटरवल का आपस में। तो अगर आपके पास x mod इज इक्वल टू आपके पास a लिखा गया है तो इफ एंड ओनली IFF, this word stand for if and only if, necessary and sufficient condition, मीन्स कि अगर एक बात से दूसरी निकलती है तो दूसरी से आप पहले भी निकाल सकते हैं। तो दोनों बातें आपस में एट द सेम टाइम चल रही होती हैं। सो इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल टू, इसका मतलब ये है कि प्लस माइनस a। सो इट इज क्वाइट नेचुरल टू से
कि अगर a का मॉड लेंगे तो वो a ही होगा और माइनस a का मॉड भी ऑब्वियसली a होगा क्योंकि दोनों सेम है। तो मॉड को अगर आप रिमूव करेंगे तो यू विल गेट द प्लस माइनस। सो सेकेंडरी इफ x मॉड लेस देन अगर a होगा तो इफ एंड ओनली इफ x इज लेस देन a एंड ग्रेटर देन माइनस a। तो इस इंटरवल को मॉड में इस तरीके से लिखा जा सकता है, मीन्स x बिलोंग्स टू, इसको लिखने का दूसरा तरीका ये है, मीन्स दैट कि अगर आपके पास यहां पे बेटे माइनस a टू a है तो इंटरवल आपका ये ओपन है, तो x इसके दरमियान तमाम वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है। तो x मॉड अगर लेस देन a है तो इसका मतलब ये है कि आपका x माइनस a और a के दरमियान लाई करता है। तो अगर यहां पर सेवंथ में अगर आप कैसे लिखेंगे कि अगर x का मॉड आपका ग्रेटर देन a है तो देन आप इसको इंटरवल की शेप में कैसे लिख सकते हैं, हाउ यू कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ इंटरवल इफ एंड ओनली इफ x must be greater than a and x is less than minus a. So this is the ORR कि इसका मतलब है कि x आपका या a से बड़ा है या माइनस a से छोटा है। तो सिमिलरली आपके पास 8 जो है वो आपके पास होगा x मॉड आपका लेस के बजाय अगर आपका लेस देन एंड इक्वल टू होगा तो इफ एंड ओनली इफ यू विल गेट x is less than equal to this one and minus a. So the story is same, just less than is replaced by less than and equal to, and the last one is last and the और आखिरी बात इसमें यह है कि x mod अगर आपके पास greater or equal to a होगा तो we can write, my dear students, we can write in this way, so if and only if x is greater or equal to a or x must be less than equal to minus a. So this is the symbol for the if, and if and only if, please note that this if and only if can be written mathematically in this way. इसके सिंबल ये भी आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह में ये बातें आमतौर पर हम लोग एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती हैं। तो ये आपके पास बेसिक इसके कुछ रूल्स हैं। अगर आप इसकी मदद से इसको सॉल्व करना चाहें तो आप इस प्रॉब्लम को मैं आपको एक्सरसाइज के तौर पे एक छोटा सा क्वेश्चन दे सकता हूं। सो दिस वन इज 2x माइनस 3 दिस मॉड मस्ट बी इक्वल टू 7। तो अगर आप सेम इस प्रॉपर्टी को आप यहां पे इस्तेमाल करेंगे तो सिम आप यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 5 एंड x इज इक्वल टू -2. So you will get these two values 5 and -2. So this will give you the answer, but please do it carefully, and for any help and assistance you can contact the concerned teacher at any time in the university times. Thank you very much.